बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अच्छा जी, जो लेक्चर 3 का लेक्चर डे 3 देख चुके हैं, बताएं ज़रा किन्होंने देख लिया और किन का रह गया। राव टीपू देख लिया। अच्छा जी। ईमान फातिमा यस। रोमा सिर्फ हाफिज दन मेरा एक रहता है। आसिया खानसा यस। ओके। तो बाकियों ने ये नहीं कि नहीं देखा। चलें, टेस्ट सीरीज लाइक अंडरस्टूड है। नो प्रॉब्लम। चले, anyways, let me share the screen and let's us start. ओके जी, स्क्रीन मेरी नजर आ रही है सबको? क्लियर है? यस यस, क्लियर। ओके। सो दिस इज आवर डे 3, स्कोप मैनेजमेंट। आपको प्रोजेक्ट स्कोप का तो पता चल ही गया कि प्रोजेक्ट स्कोप क्या होता है। लेट मी राइट। So, project scope management includes the necessary processes to ensure that the project includes all and only required work to complete the project successfully. अब होता ही है कि जब प्रोजेक्ट चार्टर बनता है तो उसमें स्कोप ऑफ वर्क होता है कि जी क्या काम होगा। उसका मेन जो कॉस्ट होती है वो फाइनलाइज होती है, टाइम फाइनल किया जाता है। एंड देन उसके पीछे उसका एक विजन होता है कि वो मकसद क्या है। ऑफ कोर्स उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स वगैरह जो भी होते हैं, दैट हैज टू बी क्लियर विद द स्टेक होल्डर्स एंड ऑल। वो भी सब आपको आइडिया है। और फिर जब प्लान किया जाता है कोई भी प्रोजेक्ट, तो ऑफ कोर्स उसको डॉक्यूमेंट शेप में लाया जाता है। दैट इज वेरी नेसेसरी। सी, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो प्लान स्कोप मैनेजमेंट, ठीक है। आप एक प्लान बनाते हैं regarding the project, whatever, if it can be either products or projects, and then collect requirements. आप सारी requirements collect करते हैं from the stakeholders. It can be एक stakeholder है या it can be group of stakeholders. आप सबसे requirements इकट्ठी करते हैं। As per project complete करने के लिए requirements आपको complete करना लाजिम है। And then define scope. The process of developing a detailed explanation of the project and the product. अब वो चाहे प्रोडक्ट हो चाहे प्रोजेक्ट हो, उसको डिटेल में आप नोट डाउन करते हैं टू ऑन अ फॉर्मेट पेपर डॉक्यूमेंटेशंस। क्रिएट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, WBS। WBS होता है कि आप किसी भी प्रोसेस को, किसी भी फेज को ब्रेक डाउन कर देते हैं इन पर्टिकुलर यूनिट्स, इनटू स्मॉलर यूनिट्स। वैलिडेट स्कोप के, वैलिडेट स्कोप आप उसको वैलिडेट करते हैं। कंट्रोल स्कोप, एंड देन दिस इज योर कंट्रोलिंग एबिलिटी। ओके, की कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट। इसके की कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? प्रोडक्ट स्कोप, प्रोजेक्ट स्कोप, यानी कि भाई डिपेंडिंग ऑन इफ इट्स अ प्रोडक्ट, द फीचर्स एंड फंक्शंस दैट करेक्टराइज अ प्रोडक्ट, सर्विसेज और रिजल्ट। ठीक है, यानी कि जैसे भाई कि एक कप है, तो कप कितने साइज का होना चाहिए, कितने वेट का होना चाहिए, दैट हैज टू बी डिफाइंड। ठीक है। प्रोजेक्ट स्कोप जो है, इट इज अ लिटिल, आई एम सॉरी, ये कौन है जो अनम्यूट है? ओके, बेटर। ओके, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो इट कैन बी बिगर इन साइज, सो ऑफ कोर्स इसका स्कोप जो है वो बड़ा होता है।
Now, the work performed to deliver a product, service, or result with specified features and functions. In a predictive life cycle, अब predictive life cycle, agile life cycle, ये तो आप लोगों को समझ में आ गई है. ये concept clear हो गया था. The project deliverables are defined at the beginning of the project. Predictive life cycle, जिसके जो के phases में जाता है. एज एक फेज कंप्लीट हुआ, देन मूव ऑन टू नेक्स्ट फेज, दूसरा कंप्लीट हुआ, देन मूव ऑन टू थर्ड फेज, और इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट होती है सिंस बिगिनिंग. एंड देन अजाइल लाइफ साइकिल, वो जो एज अ लूप में चलता है एंड इट कीप्स ऑन मूविंग इन अ फ्लो, इवन दो सम प्रोसेसेस सम फेजेस जो हैं वो मल्टीपल भी चल रहे होते हैं, बट इट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग इवन दो विद चेंजेस एज वेल. ठीक है. Overall scope of an adaptive project will be decomposed into a set of requirements. Decompose करना यानी कि उसको मजीद break down कर देना. And work be performed, sometimes referred to as product backlog. Backlog होता है जिसमें के सारी documentation होती है in a format of paper or in a chart paper. वो आगे जाके आपको मजीद डिटेल में भी explain किया जाएगा. At the beginning of an iteration, the team will work on to determine how many of the highest priority items on the backlog list can be delivered within next iteration. यानी कि वही जब आप एक चार्ट बनाते हैं तो चार्ट में उसको प्रायोरिटाइज करते हैं काम के हवाले से. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज बाय करनी है एंड इट्स अ बिग थिंग फॉर यू, सो आप उसको एक चार्ट में बनाते हैं और उसकी स्पेसिफिकेशंस लिखते हैं. उसके इवन इट कैन बी 3 प्रोडक्ट्स और मोर देन 3 प्रोडक्ट्स. लाइक एक मोबाइल ही परचेज करना हो तो उसमें काफ़ी सारे मोबाइल आ जाते हैं, फिर उनके स्पेसिफिकेशन आ जाती हैं. फिर आप जब नोट डाउन करते हो तो आप उनको प्रायोरिटाइज कर लेते हो कि विच सूट्स यू द बेस्ट. ठीक है, ये वो चीज़ है. द प्रोसेसेस कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स, डिफाइन स्कोप एंड क्रिएट WBS. ये जब WBS आप मजीद आगे जाके डिटेल में भी पढ़ेंगे तो आपको मजीद समझ आएगी. आर रिपीटेड फॉर ईच इटरेशन. ये वही बात है कि जहाँ जहाँ पे जो भी चेंजेस आती जाती हैं उस हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अपडेट कर जाते हैं. On the contrary, in a predictive project, these processes are performed towards the beginning of a project and updated as necessary using the integrated channel control change control process. जहाँ पे नेसेसरी चेंजेस चाहिए होती हैं वहाँ पे फिर आप अपने कंट्रोल प्रोसेस के थ्रू चेंजेस करते हैं एज पर द वही पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स, or it can be stakeholder requirement, it can be end user requirement. The concept of project scope management, ये भी सेम वही चीज आ जाती है adaptive और predictive style में. Requirements is defined as a coordinator or capability that is required to be present in a product, service, or result to satisfy an agreement or other formally imposed specifications. आपको रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करनी होती हैं एज अ टाइम बाय टाइम. जैसे कि स्टेक होल्डर्स से आपकी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं. अब उसमें कोई फर्दर ऐसी चीज़ है जो कि स्टेक होल्डर की तरफ से क्लियर नहीं है. ठीक है, वो बाद में आपने अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से, अपने काम के लिहाज से, अपनी एक्सपर्टीज के लिहाज से आइडिया लगाया कि इसमें ये चेंज हो सकती है which is required. So then you have to go back to the stakeholder to complete those requirements, to ask him that these changes must be required. और जो stakeholder approve करता है, you do only those kind of activities. ठीक है. Trend and emerging practices in project integration management. Determine problems and identify business needs. Identify and recommend viable solutions for meeting those needs. Elicit, document, and manage stakeholder requirements in order to meet business and project objectives. Facilities the successful implementation of product, service, or end result of the program or project. वही चीज के आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको क्या क्या चाहिए, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, हाउ टू यूज, व्हाट टू यूज, व्हेन टू यूज, वेयर टू यूज. Trailing consideration. Trailing again, it's the amendments that you do by time, customizing things. Knowledge and requirement managements.
validation and control, development approach, stability of requirements, governance, ये सब चीजें आपको आइडिया होगा ही ऑफ कोर्स पहले से. See, now this is a diagram of plan scope management. ठीक है? This is how we come up with the plan scope management. Inputs are project charter. आप लोगों को अब आइडिया है ही project charter क्या है? Project management plan, quality management plan, project life cycle description, whatever life cycle जो भी define होगा, development approach, enterprise environmental factors, organization processes, and then tools and techniques, expert judgment, data analysis, alternative analysis, meetings, and then output जो आएगा आपका वो आएगा scope management plan, requirements management plan. ठीक है? अब ये मजीद डिटेल में आगे जाके आप पढ़ेंगे. See, now this is the inputs as project charter, project management plan. Project management plan में क्या है? Quality management plan, project life cycle description, development approach. ठीक है? आप कौन से काम को कैसे करेंगे, कौन से life cycle use करेंगे, so on. Enterprise environmental factor, organization process assets. कि आप कौन से assets of course कैसे consume करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे. टूल्स एंड टेक्निक्स में आ गया एक्सपर्ट जजमेंट, डाटा एनालिसिस, मीटिंग्स, and then we have a scope management plan as describe how the scope will be defined, developed, controlled and verified. ठीक है? Process of preparing a detailed project scope statement. यानी कि आप जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं तो आप उसको बहुत ही डिटेल में मेंशन करते हैं ईच एंड एवरीथिंग. प्रोसेस इनेबल्स WBS. फिर आप मजीद उसको ब्रेकडाउन में लेके जाते हैं. Breakdown into units that would be maintained and approved. Of course, approved has to be there. अगर वो documentation या वो approved नहीं है, so that means that you are not going to do that because उसमें ना कोई ना कोई benefits हैं और ना कोई financial benefits हैं उसमें किसी किस्म के. So that is totally waste of your time, your resources, and of course the efforts. So that means that beyond the line, you're not going anywhere. Process specifies how formal acceptance of the completed deliverables will be obtained. Process to control how request for changes to detailed scope statement will be proceed. Requirements management plan describe how requirements will be analyzed, documented and managed. यानी कि वही कि आपको अपने रिक्वायरमेंट्स करने होते हैं, आपको अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है कि आप कैसे उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसको डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं एंड हाउ यू मैनेज दैट. सी दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके, फेज टू फेज रिलेशनशिप स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हाउ रिक्वायरमेंट्स आर मैनेज्ड. वही स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती जाती है आप उसको सॉर्ट आउट करते जाते हैं इन अ डॉक्यूमेंटेशन. So documentation is like visible and clear for everyone to understand, from stakeholder to the person working under you. ताकि उन्हें पता हो कि वो क्या काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. जी ये क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, everyone. If it's clear, write down. Kaiman, Farheen, Noor, Roma, जी sir, Rao, Tipu, Fansa, yes. चलें, good. Okay, again I get collect requirements. Collect requirement is a process of determining, documenting, and managing stakeholder needs and requirements to meet objectives. Again, it's the same thing. You collect requirements कि जी for example एक अगर building बनानी है तो उसका मकसद क्या है और क्यों बनानी है. Definitely you have to be very clear with your vision so that you can continue on with your mission to achieve your milestones. The key benefit of this process is that it provides the basis for defining the product scope and project scope. जब आप requirements collect करेंगे, information collect करेंगे, तो आपका product और project scope खुद ही आपको vision clear हो जाएगा. Again, the same project success is directly influenced by active stakeholders involvement.
in the discovery and decomposition of the needs into project and product requirements, and by the end taken in determining, documenting, and managing the requirements for the of the product, services, or result of the project. Again, it's gonna impact your results, of course. जितनी ज़्यादा और clear आपके पास information होगी from the stakeholder, उतनी ही ज़्यादा आपकी अच्छी तरीके से documentation होगी, और जिस तरीके से वाज़े documentation होगी, उसी बेहतर तरीके से आपकी activities सरंजाम हो सकती है. Okay, so this is a chart of collect requirements. Input, we need project charter. You all know that. Project management plan, scope management plan, requirements management plan, stakeholder engagement plan, project documents, assumption log, and then lesson learned register, stakeholder register, business documents, business case, agreements, enterprise environmental factors, organizational process assets. And then technique, tools and techniques, जो कि अभी ये मजीद आगे जाके आप लोग go through करेंगे. Expert judgment, data gathering, brainstorming, interviews, focus groups. I think ये सब चीजें आपको अब idea हो गया कि ये क्या है, right? Questionnaire and surveys, benchmarking क्या होती है? Even that has to be part of it. Okay, Asiya, no problem. अगर आपको कोई difficulty हो रही है तो it's okay. You can go through the recording as well. Okay, continuing data analysis, document analysis. ठीक है, okay, good. Decision making, voting, ये सब चीजें जो है मजीद आगे जाके ये डिटेल में आप गो थ्रू करेंगे. Now decision making, voting, multi criteria decision analysis, data representation, affinity diagram क्या है, mind mapping क्या होती है, even you're gonna go through that as well. And then the output and so forth, of course. We have interpersonal and team skills, nominal group techniques, observation, facilitation, context diagram, prototypes. Even ये भी prototypes भी क्या हैं, ये भी आगे जाके अभी आपको पता चलेगा. Then outputs, what you're gonna get is requirements documentation, ठीक है, and requirements traceability matrix. Now ये भी क्या है, traceability matrix, ये भी आगे जाके आप डिटेल में पता चलेगा आपको. So moving on. ये कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स के जो इनपुट्स हैं, ठीक है. प्रोजेक्ट चार्टर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में क्या है, स्कोप मैनेजमेंट प्लान है, रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान है, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान है, एंड देन वी हैव प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जिसमें एजम्पशन लॉग है, लेसन्स लर्न रजिस्टर्ड है, स्टेक होल्डर रजिस्टर है कि भाई आपके कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, हैविंग व्हाट अथॉरिटी, हाउ मच पावर एंड सो फोर्थ, किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है. Business documents, business case, agreements, enterprises, environmental factors, organization process assets. Okay, expert judgment, ये आ गया आपके जनाब tools and techniques, ठीक है. Okay, so in data gathering, we need, of course, we are into brainstorming, interviews. You can go like one-on-one for interviews to collect information. Okay, focus groups bring together pre-qualified stakeholders and subject matter experts to learn about their expectations and attitudes about a product or proposed about a proposed product, service, or result. यानी sometime होता है कि you have a group meeting, so you can have the information like on the table from your stakeholders or experts, या जिनसे आपको information मिल सकती है. Questionnaires and surveys, that's benchmarking, comparing actual or planned products, processes, and practices to those of comparable organizations. Data analysis, document analysis, reviewing and assessing any relevant documents information in this process. Document analysis is used to elicit requirements by analyzing existing documentation and identifying information relevant to their requirements. And then we have decision making. Unanimity, a decision that is reached whereby everyone agrees on a single course of action. ठीक है?
यहाँ पे यानी कि ऑलमोस्ट सारे ही एक ही बात पे जैसे एग्री कर जाते हैं, सो दैट इज an enmity. Majority is like decision having 50% of majority or 50-50 जो होता है, a decision reached with the support obtained for from more than 50, sorry 50% से जो above हो, that is majority. Now plurality is like ऐसे जैसे groups बन जाते हैं, having 10 in one group, 20 in another group, 30 in another group and 45 in another group. So the majority of the people in a group, that is plurality. हाँ जी, ये क्लियर हो गया. Data representation. Affinity diagrams allow large number of ideas. चलें, good. Large number of ideas to be classified into groups for review and analysis. Mind mapping consolidates ideas created through individual brainstorming session into a single map to reflect commonality. Unanimity is like it's voting. सही है, जहाँ पे वोटिंग होती है एंड इट्स अ सिंगल कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, अब वोटिंग हुई है, अब जिस चीज में मेजोरिटी में ओके है, सो दैट डिसीजन हैज टेकन. दिस इज अबाउट डिसीजन मेकिंग. इज दैट क्लियर? जी फरीन, क्लियर हो गया ये? ओके गुड, ठीक है. So mind mapping consolidate ideas created through individual brainstorming session into a single map to reflect commonality and differences in understanding and generate new ideas. This is called mind mapping. Okay, now this is how you collect the requirements. ठीक है? This is even voice of customers. Now you can मेरी आवाज आ रही है सबको? जी ओके गुड, ठीक है. See, even this is part of tools and techniques. Quality function deployment. ठीक है? QFD. In the manufacturing industry, QFD helps determine critical characteristics for new product development. वो इसको ऐसे करते थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने लेट्स से कि अगर मोबाइल लेना है, तो मोबाइल में आपके पास अब कुछ ऑप्शंस हैं, इवन दो इट्स नोकिया और सैमसंग और ओप्पो और एनी अदर. फिर आप उसको नोट डाउन करते हैं उनकी स्पेसिफिकेशन वाइज, उनकी मेमोरी वाइज, उनके रैम वाइज, एंड देन यू गो आउट विद इवन देयर वेट, हाउ मच दे वेट एज पर ईच मोबाइल. और फिर आप रिजल्ट्स पे आते हैं कि कौन सा किस हद तक आपके लिए सूटेबल है. दैट्स हाउ यू पिक योर, यू चूज योर प्रोडक्ट. ये क्लियर हो गया? एक सिंपली आप चार्ट बनाते हैं विद गिविंग देम नंबर्स. ठीक है, तो जिसके नंबर फिर ज्यादा बनते हैं एज पर स्पेसिफिकेशन वाइज या कलर वाइज या इवन वेट या इवन माइट बी यूजेज, सो यू पिक दैट वन. ओके, कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स, ये एक सिंपल डायग्राम है. ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल अ होटल, सो नीड टू बुक अ रूम. ठीक है, अब उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? ऑफ कोर्स उनके लिए गेस्ट हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके लिए रूम्स हैं. ठीक है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज होंगे, रिजर्वेशन सिस्टम जो उन्होंने लेट्स से के थ्रू कॉल सेंटर चैनल्स बनाए होते हैं to gain the business, and then they are interacted with banks as well for the payment processes and all. So these are like everything how you collect the requirements. ठीक है, now this is prototypes जो कि आपने देखा था टूल्स एंड टेक्निक्स में. सिंपली प्रोटोटाइप्स आपने देखा होगा कि बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं जिनके पहले एक छोटे साइज के मॉडल्स बनते हैं. ठीक है, यानी कि सेम स्ट्रक्चर वाइज, सेम कलर और एवरीथिंग हैज टू बी सेम बट स्मॉलर इन साइज एज अ मॉडल. तो दोज आर कॉल्ड प्रोटोटाइप्स. ठीक है, क्लियर हो गया? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो बताएं.
चलें, गुड हो गया। ओके, अगेन कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन। इसमें क्या क्या है? बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है, स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स है, सोल्यूशन रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसमें फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एंड रेडीनेस रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। आई थिंक ये सब चीज़ें आप गो थ्रू कर चुके हैं, आपको आइडिया हो गया होगा कि व्हाट आर दीज काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड हाउ टू कलेक्ट इट। एंड देन रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। This is a simple table that link requirements to their source and trace them throughout the project lifecycle. See, ये है requirement traceability matrix. यहाँ पे आ गया project name and then cost center, project description. फिर आप उसको ID में define करते हैं कि जी आपका कौन सा बंदा क्या है, 001, 002, 003, 004, and then you go with them as per their requirements you have received, ठीक है। जो जो इन्फॉर्मेशन आपने वहां से ली है, रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शंस, किससे आपने क्या रिक्वायर किया है, बिजनेस नीड, अपॉर्चुनिटीज, गोल, ऑब्जेक्टिव्स, सो फोर्थ, ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट्स कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, वो किस लिए आप ये गैदरिंग कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। एंड देन यू मजीद ब्रेक डाउन करते हैं उसको इन डिलीवरेबल्स कि आपने डिलीवरेबल क्या देने हैं, प्रोडक्ट डिजाइन क्या हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, एंड देन टेस्ट केसेस। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया? ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स इज क्लियर? ईमान यस, खानसा, खेराव, नूर फातिमा, नूर जैनब, फरहीन, रोमा, अदनान। Okay, good. Define scope. Now, this is a defined scope. KG, how we define any scope. So inputs are again project charter, project management plan, scope management plan, project documents, exception log, requirements, documentation, risk register, and you will gonna go आप आगे जाके अब रिस्क रजिस्टर के बारे में मजीद डिटेल में देखेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे भी, और फिर आपको पता चलेगा रिस्क रजिस्टर में क्या क्या आता है, कैसे बनाया जाता है। एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स में आ जाता है जी एक्सपर्ट जजमेंट, डाटा एनालिसिस, अल्टरनेटिव एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस, इंटरपर्सनल एंड टीम स्किल्स, फैसिलिटेशन, प्रोडक्ट एनालिसिस। When output, we're gonna get project scope statement, project document updates, assumption log, requirements, documentation, requirements and traceability metrics, stakeholder register। ठीक है, अब ये मजीद आप डिटेल में आगे बढ़ेंगे। डिफाइन स्कोप कि जी वेल लेट मी टेल यू समथिंग ओवर हियर गाइस। आपका काम ये बनता है कि जब आप एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं ना एज पर आवर सेशन, सो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो दैट इज गुड एनफ फॉर यू। अगर नहीं बना रहे तो आई वांट यू गाइस टू गो अगेन बैक, एक दो बार फिर इसको रिकॉल करें, एंड देन यू डू मेक सम नोट्स। ठीक है, आप जब नोट्स बना लेंगे तो नेक्स्ट डे यू हैव अ लुक एट देम। वो फिर क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके फिंगर टिप्स पे आ जाती हैं। जैसे कि लेट मी रिकॉल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट। अब प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है, रिसेप्शन लॉग, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, रिस्क रजिस्टर। ठीक है, ये आ गया डिफाइन स्कोप में। ठीक है, अब वैसे ही प्रोजेक्ट चार्टर लेके अगर लेट्स से प्रोजेक्ट चार्टर, व्हाट इज प्रोजेक्ट चार्टर, इसमें क्या क्या होता है, इसमें कौन ऑथराइज होता है और कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन अकाउंटेबल है, कौन लेट्स से के इसको डील करता है, मैनेज करता है। सो यू गाइस शुड नो दैट। और ये आप कैसे कर सकते हैं कि यू हैव टू गो थ्रू रिकैप ऑलवेज, काइंड ऑफ मेक इट हैबिट। ठीक है, सो मूविंग ऑन, enterprise and this is like for inputs of defined scope। ठीक है, एंड टूल्स एंड टेक्निक्स में आ जाता है वही एक्सपर्ट जजमेंट, डाटा एनालिसिस, अल्टरनेटिव एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस, interpersonal and team skills, facilitations, product analysis. Now you're gonna go with the details of it. ये आ गई आपकी डिफाइन स्कोप की आउटपुट्स कि जी आउटपुट आपका क्या आएगा, दैट यू आर हैविंग प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट, detailed description of project outputs and necessary work to achieve those outputs. It also provides a common understanding of project scope among the stakeholders. Project scope description.
ठीक है. Progressively elaborates the characteristics of the product, service or results described in a project charter and requirements documentation. आपको उसमें मजीद डिटेल मिल जाएगी हर चीज की. Acceptance criteria, a set of conditions that is required to met before deliverables are accepted. ये वही जब आप स्टार्टिंग में एक प्रोजेक्ट चार्टर बनाते हैं तो आप उसके स्कोप डिफाइन करते हैं कि जी ये स्कोप है, और फिर आपका एक वही ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. सो यू गेट टू हैव अ बेटर आइडिया बिफोर डिलीवरेबल्स के आप उसको एज पर टू द मार्क उसको प्रोवाइड कर रहे हैं. Deliverables, any unique and verifiable product, result, or capability to perform a service that is required to complete a process, phase, or project. Deliverables also include ancillary results such as project management reports and documentation. उसमें जो रिजल्ट आता है वो आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट्स होती है. Project exclusion generally define things that have been excluded from the project. यानी कि वो चीजें जो आपके प्रोजेक्ट में हैं ही नहीं. So you don't mention those things. Project document updates, assumption log आ गया, requirements and documentation आ गई, requirements traceability matrix आ गया, stakeholder register आ गया. So this is the difference between project charter and project scope statement. ठीक है. अब project charter में आपके पास ये सब चीजें हैं, which is project purpose or justification. This is, we are talking about project charter, remember? So measurable project objectives and related success criteria, high level requirements, high level project description, high level risks, summary milestone schedule, summary budget, stakeholder list, project approval requirements, KG, what continuous success, who decided, who signs off, and so forth. Assigned project manager responsibility and authority level, name and authority of a sponsor or the persons authorizing the project charter. यानी कि भाई जो मेन आपका स्पॉन्सर है या जो मेन आपका स्टेक होल्डर है. And whereas in project scope statement, we have only these 4 items, which are project scope description, acceptance criteria, project deliverables, project exclusions. ठीक है, ये क्लियर हो गया आप सबको? अब इसमें अगर किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो चलें, गुड हो गया. Okay, so create work breakdown structure. Remember we spoke about WBS earlier, we mentioned that, and now we're gonna have in detail about what work breakdown structure is. Excuse me. Okay, so this is create WBS. These are the inputs: project management plan, scope management plan, project documents, project scope statement, requirements, documentation, enterprise environmental factors, organizational process assets. Tools and techniques, we have expert judgment and decomposition. So what is decomposition? We're gonna go on in details. अभी आगे चल के डिटेल में बात करते हैं. And outputs that you'll have is scope baseline, project documents update, assumption log, requirements and documentation. So these are the inputs. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान हो गया, ठीक है. उसमें स्कोप मैनेजमेंट प्लान आ जाएगा जो कि हम लोग ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं. प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में हो गया प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट एंड रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स, एंड दीज आर द टूल्स एंड टेक्निक्स. ठीक है. अब एक्सपर्ट जजमेंट तो एज पर एक्सपर्ट आइडिया हो ही गया. So decomposition is a technique used for dividing or subdividing the project scope and project deliverables into smaller or more manageable parts. यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एक फ्लोर जो है वो रेनोवेट करना है, सो आप उसको मजीद डिकम्पोज कर देंगे कि जी सबसे पहले तो वॉल्स पेंट होनी है, एंड देन यू हैव टू रिमूव ऑल द जो एक्स पेंट है उसको आप बराबर करेंगे, एंड देन यू फिल अप स्मॉल गैप्स इफ देयर आर.
and then you go on for the paint sector, ठीक है? तो ये phases जो हैं वो आप मजीद break down कर लेते हैं. That is to decompose. A WBS structure may be created through various approaches. Some of the popular methods include top to down approach, यानी कि वो होता है कि आप from top to down करते हैं, जो कि let me explain you in detail. The use of organization specific guidelines and use the WBS templates. A bottom-up approach can be used during the integration of subcomponents. The WBS structure can be represented in a number of forms, such as using phases of a project lifecycle as a second level of decomposition, with the product and project deliverables inserted at the third level. Now, using major deliverables as a second level of decomposition, incorporating subcomponents which may be developed by organizations outside the project team, such as contracted work. वो होता ही है कि जब आप बाहर से भी let's say कि normally होता क्या है कि कोई भी project होता है उसमें बाहर ठेके पर भी लोग ले आते हैं, याला बाहर से टीम लेके आए, उन्होंने अपना काम किया, and that's it, the work is done, and you finalize everything with them before starting the work. As the work decomposed to greater levels of details, the ability to plan, manage, and control of the work is enhanced. However, excessive decomposition can lead to non-productive management effort, inefficient use of resources, decreased efficiency in performing the work, and difficulty aggregating data over different levels of WBS. वही बात, जब टेक अवे आपने टीम ले ही आए हैं, सो वो जाने उनका काम जाने, यू फाइनलाइज ईच एंड एवरीथिंग वहीं पे. अच्छा जी, हाउ टू क्रिएट WBS आपको समझ में आया कि जी व्हाट इज WBS? Decomposition may not be possible for a deliverable subcomponents as will be accomplished far in the future. The project management team usually waits until the deliverables and subcomponents is agreed on, so the detailed of the WBS can be developed. The technique is this technique is sometimes referred to as rolling wave planning. See, sometime ऐसा होता है कि आप project start कर देते हैं and you don't get the proper information as per the changes required. जहाँ जहाँ पे जो जो चेंजेस आती जाती हैं वहाँ पे आपका थोड़ा सा जो लेट्स से के काम का तरीका है थोड़ा चेंज होता रहता है. सो यू गेट द इंफॉर्मेशन, यू कंप्लीट द फेज. आपको इंफॉर्मेशन आती है, आप वो एक फेज कंप्लीट कर देते हैं, फिर आपके पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आती है, फिर आप नेक्स्ट फेज पे काम करना स्टार्ट करते हैं. सो जैसे वही रोलिंग वेव प्लानिंग मींस जैसे समंदर में लहरें आ रही होती हैं किनारे पे, इट कम्स बाय एक करके एक लहर आ रही होती है. ये समझ आ गई सबको? इज दिस क्लियर? रोलिंग वेव प्लानिंग. ओके, खान सा क्लियर, नूर क्लियर, राव क्लियर, ईमान फातिमा क्लियर. चलें, गुड, ठीक हो गया. The WS represent all product and project work, including the project management. The total of the work at the lowest level should roll up and higher levels so that nothing is left out and no extra work is performed. This is sometimes called 100% rule. वही बात कि आपको वही काम करना होता है that has been already documented, जो कि agreed हुआ हुआ. So WBS sample 1, ये sample 1 आ गया जिसकी हम लोग बात कर रहे थे. This is the sample 1, ठीक है? Using phases of the project life cycle on the second level. Now, for example, this is a software product, ठीक है? तो इसमें क्या है, project management आ गया. Project management goes to planning, and then planning goes to meeting, and then meeting goes for administration. Product requirements में software user documentation आ गया, training program materials आ गया, and then detailed design software, user documentation, training program, so forth. Now, user documentation इसीलिए कि जी what are the requirements?
एंड देन ट्रेनिंग प्रोग्राम इसलिए कि व्हाट हैव यू मेड एंड हाउ टू कंज्यूम इट, अब उसको कैसे लेके चलेंगे आगे। ये क्लियर हो गया। नाउ दिस इज सैंपल टू विच वी टॉक्ड अबाउट, दिस इज सैंपल टू। ठीक है, यूजिंग मेजर डिलीवरेबल्स एज द सेकेंड लेवल ऑफ डिकम्पोजिशन। दिस इज सिंपली एग्जांपल ऑफ एयरक्राफ्ट सिस्टम। ठीक है, as project management, then system engineering management, and then support PM activities. So on training होती है, of course, equipment training, facilities training, and then service training. Then data, technical, other engineering data, and then management data. Air vehicle goes for airframe, and then engine, communication system, navigation system, fire control system, and so forth. And then there is always support equipment, organizational level, intermediate level, depot level. Then facilities, we have a base building, maintenance facilities, and then test and evaluation में mockups होते हैं, operational and then development and then so forth tests होते हैं। and ये concept clear हो गया। as WBS, that is like work breakdown system, understood है? Clear everyone? Okay, good हो गया। So create WBS, this is scope baseline। अच्छा, स्कोप बेसलाइन का तो आपको आइडिया हो गई। प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपडेट्स, इसमें एग्जम्पशन लॉ, रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशंस एंड सो फोर्थ। ओके, केस स्टडी ऑफ वेल केस स्टडी, आई थिंक हमारे पास अदनान जमील अवेलेबल है आज, राइट? अदनान, आर यू अवेलेबल? ओके, और आई थिंक बाकी भी नहीं है। चल, नो प्रॉब्लम, we're gonna have a case study on Sunday इंशाल्लाह onwards। फिर ये है कि जब हम लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी करेंगे ना, प्रैक्टिकल में आप लोगों को बहुत सारा ये जो मटेरियल है ये काम करने का मौका मिलेगा, और फिर और जो बेहतर अंडरस्टैंडिंग है वो आप लोगों को होगी ना। श्योर श्योर फरीन, नो प्रॉब्लम, विल गोना डू दैट इंशाल्लाह। सो कंटिन्यू ऑनवर्ड्स। अच्छा जी, here we have project charter schedules management। ठीक है, wait, okay। अच्छा जी, प्रोजेक्ट शेड्यूल मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? प्लान शेड्यूल मैनेजमेंट, डिफाइन एक्टिविटीज, सीक्वेंस एक्टिविटीज, एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन, डेवलप शेड्यूल, कंट्रोल शेड्यूल। और इसकी टर्मिनोलॉजी में क्या है? शेड्यूल डाटा, शेड्यूल मेथड, शेड्यूल टूल, शेड्यूल मॉडल, शेड्यूल बेसलाइन, प्रोजेक्ट शेड्यूल, डाटा डेट। अच्छा जी, अब ये है प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट। नाउ ये कैसे कैलकुलेट की जाती है? सी, शेड्यूलिंग मेथड, फॉर एग्जांपल CPM, शेड्यूलिंग टूल्स, शेड्यूलिंग मॉडल, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, सो फोर्थ, जो जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, दैट ऑल कंबाइन टुगेदर टू आउटपुट ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूल। हाँ जी, प्रोजेक्ट शेड्यूल की समझ आ गई आपको? अब मजीद आगे मजीद डिटेल में इंफॉर्मेशन है इसकी, जो कि आप लोगों को बेहतर आइडिया हो जाएगा। ओके, दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूल मैनेजमेंट। ठीक है, आई थिंक ये जब आप एक दफ़ा गो थ्रू करोगे, स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर की हुई है,
तो आप लोगों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूल मैनेजमेंट। तो फिर भी अगर किसी को समझ में ना आए तो जस्ट लेट अस नो, ठीक है? सो वी कैन एक्सप्लेन इन डिटेल्स ट्रेंड्स एंड इमर्जिंग प्रैक्टिसेस इन प्रोजेक्ट शेड्यूल मैनेजमेंट। वेल गाइस, आई थिंक आज का तो मेरा ख्याल है टाइम भी अप हो गया, तो विल गोना रैप ओवर हियर। ठीक है, आज हम सेशन यहाँ पे रैप अप करते हैं। तो फ्रॉम हेयर विल गोना स्टार्ट ऑन संडे इंशाल्लाह। तो मजीद फोर्थ डे की मैंने वीडियोस शेयर कर दी हुई हैं ऑलरेडी ग्रुप में, आप लोग याद से वो भी गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड हो सके तो एक थोड़ा सा ना रिकॉल कर लीजिएगा कि डे 1, डे 2 और डे 3 हम लोगों ने क्या क्या गो थ्रू किया है, ताकि सबकी एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़रा मजबूत हो जाए पहले से। ठीक है, आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, ख़ास तौर पे जो फेजेस हैं, जो नॉलेज एरियाज हैं, जो प्रोसेसेस हैं, एंड देन सो ऑन वी कैन कंटिन्यू। ठीक है, जब ये चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी ना, तो आगे आपके लिए मज़ीद और बेहतर से आसानी हो जाएगी हर चीज़ को समझने में। ठीक है, एंड देन जब हम लोगों का केस स्टडी एक होगा, जब हम उस पर काम करेंगे प्रैक्टिकली, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रहेगा इंशाल्लाह, होपफुली। ठीक है, सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? एनीबडी? ओके, विच मीन्स ऑल गुड टू गो। ठीक है, तो चलें, ठीक है फिर इंशाल्लाह। बाकी अब संडे को फिर मुलाकात होती है। ठीक है, चलें, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।